हे, तुम वही हो ना? वही ना जिसकी नीट की एग्जाम है 4 महीने में और उसे अब तक पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए। डोंट वरी, आई एम हियर। हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व, अ थर्ड ईयर MBA student, and welcome to my channel Skills in Scrum. Today we will be discussing things that you as a new UG preparing student should not be doing to get good marks in your NEET exam. So let's focus on first things first. Stop looking for new resources. पिछले 2 साल से जिस बुक से पढ़ा है, जिस नोटबुक से पढ़ा है, जिस इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ा है, उससे पढ़ो। नए रिसोर्सेज ढूंढने जाओगे, दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। So stop looking for new resources. Second thing, focus on your weak topics. Weak topics will be your moral support. एग्जाम में तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अगर वीक टॉपिक्स को आज अवॉइड करोगे तो एग्जाम में उसका एक भी क्वेश्चन आ गया तो यू आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो फोकस ऑन योर वीक टॉपिक्स। थर्ड थिंग यू शुड बी फोकसिंग अपॉन, और जो मेरे टीचर ने मुझे गाइड किया था वॉज दैट अगर तुम्हारा 80% सिलेबस कंप्लीट है, स्टॉप देयर। अगर तुम्हारा 80% सिलेबस कंप्लीट है उसके ऊपर 100% फोकस करो, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट 80% कंप्लीट सिलेबस इनटू 100% कंप्लीट सिलेबस। 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। सो बेटर 80% को 100% रिवाइज करने में फोकस करो रादर देन गोइंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ 100% ऑफ योर सिलेबस। नेक्स्टली जो हर कोई करता है और हमारे घर वालों ने भी की थी, आपके घर वाले भी कर रहे हैं, इज कंपेयरिंग योरसेल्फ। स्टॉप इट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। ही इज रनिंग हिज ओन रेस, यू आर रनिंग योर ओन रेस। तुम्हारा पाथ अलग है, उसका पाथ अलग है। तुम दोनों को भले यू बोथ गाइज आर गोइंग टू गिव नीट एग्जाम, but the way you are preparing is not same as that person. So stop comparing. Comparison will destroy you completely. Believe me, I have been through this. So don't compare yourself. You are practicing with differently, you are studying differently, your methodology is different. So क्यों करना है comparison? खुद से कंपेयर करो कि लास्ट टेस्ट में मेरे इतने आए थे, इस टेस्ट में इतने आए हैं, मेरा नेक्स्ट टेस्ट का इतना गोल है। या फिर कल मैंने बस 2 ही टॉपिक्स पढ़े थे, आज मैंने 1 टॉपिक पढ़ा है, कल मैं 2 टॉपिक पढ़ूंगा। अपनी ग्रोथ पे फोकस करो रादर देन कंपेयरिंग विद अदर्स। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ इन दीज लास्ट 4 months. These months are very crucial, so focus on yourself. Next mistake every student makes, even the NEET PGs do, is कि I will complete my syllabus, I will revise it once and then I will solve mock test. Don't. Believe me, this will be your last mistake that will put your marks in jail. Don't do that. Start solving questions, start solving mock test. Mock test will help you categorize your syllabus. It will help you, guide you for your upcoming 4 months of revision. So start solving mock test. And the best way to solve mock test is by doing it in an environment which gives you the feel of an exam hall. Don't give mock test by sitting in kitchen, in hall and solving them. No. Make sure that your environment is quiet, completely calmly sit down and then solve your exam. Mock test, take mock test seriously. सी अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है ना तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझो रादर देन लर्निंग द सब्जेक्ट। पहले इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम पैटर्न ना यू कैन क्रैक इट। क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है लास्ट मोमेंट पे इतना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि इतना ज़्यादा जितना पढ़ा है सब वेस्ट हो जाता है। सो बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम पैटर्न फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। लास्ट के 4 months से यू कैन डू इट। सो फोकस ऑन दैट। Focus on high yielding topics. Biology half of your marks carry करता है, so focus on biology. Focus on the topics which will give you more marks, that is biotechnology, genetics. बहुत बड़े topics है I know, but high yield topics है, focus on them. Similarly for chemistry, physics, focus on high yielding topics. Physics, focus on thermodynamics. It's the best topic you can learn in your 11th and 12th.
अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो गए तुम। The first mistake most of the NEET preparing students do is ignoring NCERT. Don't ignore it. NCERT is like a Bible for the students who are preparing for NEET UG. I'm telling you, अगर तुमने NCERT पढ़ा है तो no one can stop you from scoring good marks. Read NCERT line by line for your biology. Similarly, for inorganic chemistry, read it. For physics, solve questions from NCERT. They are the best question you can solve. The next mistake is such a subtle mistake that everyone is doing it, but no one realizes that they are doing it. That is not staying consistent during your preparation. I'm telling you, if you are consistent for next 4 months, there is no one in this world that will stop you from scoring good marks and getting a very good medical college. I'm telling you, you should be focusing or being consistent. Consistency always wins. I'm telling you, it's the best tool you have in your gearbox. So stay consistent rather than making yourself burdened by things on last day. Stay consistent from day one and you will be happy that on last day you have been consistent. अगर नहीं हुए ना consistent and you start procrastinating, it's a downhill. No one can save you. So stay consistent. Last but not the least important topic for today's video is health. Health is the main thing and everyone ignores it like it's nothing. Focus on your health. Eat healthy. Have healthy habits. Have a good sleep. At least have 6 hours sleep. Now 6 hours sleep is minimum. Don't pull all nighters. कुछ नहीं होने वाला। अगर लास्ट मोमेंट पर तुम बीमार पड़ गए ना, कोई यूज़ नहीं है ये 5, 4, 6 महीने और पिछले 2-3 साल पढ़ने का। यूजलेस। So focus on your health, eat healthy, have healthy habits, do exercise, do meditation. Just give 5 minutes in the morning. Meditation करो, पूरा दिन काम लेगा. Not just your physical health, but your mental health. These 4 months are very much pressurizing. I know it. You know it. If you are feeling pressurized, feel free to talk to your friends, to your parents, to your teachers, and I am sure your friends will be willing to talk to you because they are going through the same thing. As Chanakya said, learn from the mistakes of others. Here I am telling you my mistakes to learn from them. That's it for today. We'll meet in the next video. Until then, subscribe to my channel. You can follow me on Instagram. All the best for your NEET exam and we will keep meeting here at the same time on the same day. Until then, stay tuned.